he has polished me. He has slapped me at times. He has laughed at me at times. But he's the one who has actually made me to write how to write and what to write. आज की मुलाकात ऑथर सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि अभी तक आप जान चुके होंगे कि इस शुमारे में, इस सीरीज़ में हम ऑथर्स को बुला रहे हैं जिन्होंने कश्मीर पे काम किया है। इनकी जो कलमकारी है, इनके जो लिखने का तरीका है, उसमें कश्मीरियत झलकती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने दावत दी है मुश्ताक बर्क साहब को, जो कि वादी के मशहूर और मारूफ ऑथर हैं और इन्होंने 19 किताबें लिखी हैं। मुश्ताक साहब, आपका इस्तकबाल है। Thank you. First of all, I would like to thank the producer of the program for inviting me for this series. चलता है, this is the part of life. लिखना is like bread and butter for you. So you live in Kashmir, and people who live in the conflict zone, they have a lot to express, a lot to read, a lot to write. True. So I just observe and write the things, nothing more. तो मुश्ताक साहब, अगर हम आपकी तारुफ की बात करें, जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए अपने एक छोटा सा तारुफ देते हैं। मैंने up to my graduation, my subjects were science, but मैंने लिटरेचर एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया था और मैं ओन चॉइस। तो फिर यूनिवर्सिटी पीजी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में, एंड आई वाज फ्रॉम क्लास आई थिंक फ्रॉम 12th। तो मैं एक इंग्लिश प्रोफेसर के पास पढ़ते थे हम, प्रोफेसर निसार। तो one day he put a task to me. You have to write the summary of Ozymandias poem. Okay. Right. I was the shyest boy in the class. I hardly knew how to do it, but I tried. I tried my best. So next morning, he asked me for the piece of paper. After going through, he had a pencil in his hand. On the opposite side of the page, he wrote "a good try." The page is still laminated with me. Oh, and that was it. That was it. That was your calling? Exactly. So our teachers play a major role, and mentors, we know we must have mentorship as far as the writing is concerned. True. Nobody can be a writer on his own unless and until he has a mentor. So I believe Professor Nisar, I give credit to him that he actually nursed me, and I don't know what he's observing me, but he pushed me, and alhamdulillah, from that day I'm not looking back. कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जग्राफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। अभी मैंने आपके तारुफ में जो छोटी सी एक बात कही वो ये थी कि आपने 19 किताबें लिखी हैं। जी जी जी। तो कैसे कर लिया आपने ये, क्योंकि 19 इज़ अ ह्यूज नंबर। ये बहुत लोग सवाल करते हैं जी। तो मैं उनको सिर्फ ये बोलता हूँ, आप कितने घंटे सोते हैं? तो मैं कितने घंटे जागता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू सैक्रिफाइस सम कंफर्ट्स। तो मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आता हूँ। तो आई हैव curtailed my social life even, but I just want to say how much I can contribute to the society. उसमें particularly मेरा जो अपना personal liking है that's for Sufi poetry. Okay. क्योंकि when you read Sufi poetry we should actually feel proud of it. This is a golden legacy that our saints have left for us. So there was no takers on it. So I believe that is the right time for the world to know that Kashmiri Sufi poetry is excellent. So therefore I tried, I have initiated, I started with the verses of Wahab Khar, and then Mystic Voices of Kashmir,
Okay. then Songs of Swachkral, Okay. then 3 volumes of Ahad Zargar, जी. and right now I am working on Shams Fakir. शमस फकीर. Yeah, so जी. this is how I do it. It's a hectic job. People often criticize you for being the sole proprietor of translator, but I don't listen to people. I say, okay, let me go ahead. Then you have the better chances. You can do the better, but somebody has to take initiative. बिल्कुल. तो आपने कहा कि आप कश्मीरी पोइट्री, सूफ़ी पोइट्स जो हैं, सूफ़ी शौरा जो हैं, उनका काम ट्रांसलेट कर रहे हैं. उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू के बारे में क्या ख्याल है, उर्दू के किसी पोइट का? उर्दू में मैंने वैशी सईद की एक कलेक्शन थी जी. उसमें 36 शॉर्ट स्टोरी थी उर्दू में. ओके. सो मैंने उसको ट्रांसलेशन किया उर्दू में, और उसमें अशाई जी है, शबनम अशाई जी, उनके नज़म्स जी. उनको मैंने ट्रांसलेट किया. और हिंदी में सतीश विमल जी साहब, उनकी 2 बुक्स मैंने ट्रांसलेट की. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 115 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस ओके. अपनी. जी. उसके बाद मेरी 3 एंथोलॉजीज़ है इंग्लिश पोइट्री की. फिर डॉक्टर सोहनलाल कोल को मैंने कश्मीरी नावल जो उन्होंने लिखी है, साइकेट्रिक वार्ड, आई ट्रांसलेटेड दैट एज वेल. तो चल रहा है, ऐसे कर रहे हैं. अभी हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, वो ये है कि हाउ टू एनालाइज अ शॉर्ट स्टोरी, कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज में. उनको मैंने एनालाइज करके 2 बड़े राइटर्स के, शफ़ी अहमद साहब हैं हमारे, और साहित्य एकेडमी अवार्डी महिदी ऋषि साहब हैं. सो उस पर काम हो रहा है अभी. तो यू हैव लाइक वेंचर्ड थ्रू ऑल दीज लैंग्वेजेस, कश्मीरी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया. आपके हिसाब से लिखना या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा? द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशन इज़ योर मदर टंग. कश्मीरी. बिल्कुल कश्मीरी. बट बदकिस्मती ये है कि वी हैव नॉट बीन टॉट, राइट. तो शायद जितना आज काम हुआ है कश्मीरी लैंग्वेज को लेके, उतना पहले नहीं था. बट पीपल आर लर्निंग इट. मेरी डायस्पोरा में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एंड वी डिस्कस पोइट्री कश्मीरी स्पेशली. तो मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, व्हाट यू आर एग्जैक्टली, दिस इज़ द मदर टंग. बिल्कुल. आपने कश्मीरी में कुछ लिखा है? कश्मीरी में गज़ल लिखे है, कुछ नज़म लिखे हैं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ का जो मिजाज है लिखने का इज़ टोटली डिफरेंट. तो उसमें वो जो हमारे आइकन्स ने एक मिसाल छोड़ी है, इतनी बुलंद मिसाल है, इतनी ज़्यादा एक काइंड ऑफ अ टावर, अ पिलर है, तो उसके बराबर जाने की हिम्मत भी नहीं है. तो धीरे धीरे इफ़ यू स्टार्ट विद, यू कैन डेफिनेटली डू. बट इन इंग्लिश you have variety of word choice. Okay, vocabulary word choice ज़्यादा है, तो जो कश्मीरी में नहीं है मेरे हिसाब से अभी नहीं है मुझे, because is a vast language, and we should be proud of such a language. और especially सूफी पोइट्री में जो metaphors यूज़ हुए हैं, it's amazing. मैंने यूरोप की पोइट्री पढ़ी है, और कश्मीरी सूफी पोइट को रिलेट जब करते हैं ना, यू विल फील प्राउड दैट हाउ आवर सेड्स एंड सेजेस और पोइट्स, सूफी पोइट्स हैव एक्चुअली क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल ऑरा. तो देख के ही बनता है. हमारे यहाँ तो फोक टेल्स का भी बहुत ज़्यादा रिवाज रहा है पहले से. तो आप ये बताइए, कभी आपका मतलब जैसे आपने कहा कि आपको सूफ़ी जॉनरा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई या फोक टेल्स हो गई, उसमें आपका इंटरेस्ट है? फोक टेल्स में एक डॉक्टर अयाश आरिफ साहब की एक थीसिस जो फोक टेल्स में थी, तो मैंने वो बुक पढ़ी. तो देयर आर लॉट ऑफ मिस्टिकल एलिमेंट्स इन दैट. तो मैं फोक टेल्स में भी वो एलिमेंट देख पाया, मेटाफिजिक्स देख पाया. तो जब मैंने उनकी वो थीसिस पढ़ी, आई कुड फील थ्रू दैट फोक डांस, जिसको हम दम्बील बोलते हैं, जब उसको टर्की में वर्ल बोलते हैं, राइट. देयर आर मिस्टिक एलिमेंट्स ऑल ओवर, वी कैन नॉट डिनाई दैट. कोई भी जॉनरा हो, यू विल फाइंड द मिस्टिकल डिमेंशंस इन दैट.
जब आपकी टीचर ने आपको वो अच्छा रिमार्क लिखा और उसके बाद आपने शुरू किया लिखना, देयर इज नो लुकिंग बैक यू सेड, तो फिर कोई ऐसे ऑथर्स थे, कोई ऐसे पोइट्स थे जिनको आपने पढ़ा, कंटिन्यूसली पढ़ा और आपको लगता है कि मैंने इंस्पिरेशन इनसे ड्रॉ की है? ऑफ कोर्स खलील जिब्रान, आई विल नेवर फॉरगेट हिम. मतलब ही हैज पॉलिश्ड मी, he has slapped me at times, he has laughed at me at times, but he's the one who has actually made me to write how to write and what to write. Okay. I have been impressed by few authors. One is my favorite, William Blake. Okay. Then guided by T.S. Eliot, W.B. Yeats. Then if you talk of Kashmir, Sufi poetries, and then Rahman Rahi, one of the major voice we had, a very powerful voice. Then you have read Mahjur as well. And apart from that, if you go back to the history, आपको Lal Dil और Sheikhul Alam, there's a treasure. You get everything from that. And believe me, जो उन्होंने इतने साल पहले लिखा है, it has still the readership. That is how poets live. They never die. They never die. I guess every writer has that one phase in his or her life जहाँ उनको writer's block आता है. Writer's block is I faced it 4 years back. Okay. I used to pull my hair out. Why is it so? Then my well-wishers explained me that you should read your own writing in poetry or fiction or whatever you're writing. You can get back. But it took me almost 3 months to get back from that. It's an ailment. It's a kind of, you feel alienated. But Alhamdulillah, every good poet, every good writer has faced this. And I think this is a part of life. It teaches you more than what to write and why are you struggling. At times I feel I'm short of words. At times I can feel I can write pages together. When I was writing my novel, Sufi novel, The Shades and Shadows, believe me, first 2 chapters I have typed them in 3 days. 3 days? 3 days. But for the last chapter, it took me 1.5 years. Oh, that's huge. That was a huge gap. Yeah, because that was the period when I was actually suffering and trying to do what suits the plot. So at times you have that. This is the day and night. You don't have the days all. You don't have the nights all. So it is a part of life. You need to go ahead. तो अगर किसी ऑथर को, किसी राइटर को राइटर्स ब्लॉक आ रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक ही और शी शुड डू? मतलब हाउ डू यू फाइट इट बैक? मुझे लगता है कि दिस इज अ क्वेश्चन which has relevance with your personality. For example, आपका सर दर्द है, you either take tablet or you take a tea, right? मुझे, in my case, I visited my own writing. Okay. So I could feel what was the inspiration for me, what was the fountain had, and ultimately I got back. So उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मुश्किलात होती हैं जो कि एक राइटर को फेस करनी पड़ती है अपनी लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे. मे बी कभी कभी वो वर्ड्स नहीं मिलते या कभी कभी राइटर्स ब्लॉक, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे. इसके अलावा आपको अगर मैं आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में पूछूं, आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 2 मेजर प्रॉब्लम्स है यहाँ पे. वी हैव लेस नंबर ऑफ पब्लिशर्स एंड इफ यू आर अ राइटर यू गिव योर ब्लड and then you need to pay for it. Okay. तो ये सबसे बड़ा हमारा लिक्यूना है. इतने सारे राइटर्स हैं और पब्लिशर्स कुछ ही है हमारे पास. एंड मुसीबत की बात यह है कि you give them the best of it. They produce it as a product. वो उस पर बिजनेस करते हैं. किताबों की कीमत इतनी ज़्यादा होती है that reader cannot afford it. तो एक तो वो चीज़ वो बहुत मुश्किल है कि वी डोंट हैव द एक्सपोजर ऑफ पब्लिशर्स. दूसरा ये है कि रीडरशिप थोड़ा कम हो गई अब. लोग कम पढ़ने लगे हैं आजकल, तो बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एक्सप्लोरेशन. तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं. हाँ, एक और ये भी प्रॉब्लम है जो शायद सीरियस है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेसरान हैं या जो वट एवर हु द राइटर्स आर, they don't show interest in reading the contemporary जो आजकल के writers हैं. I don't know, are they
उनको अच्छा नहीं लगता है या वो पढ़ना नहीं चाहते, बट देयर इज़ अ गुड वॉइस अराउंड. अगर आप यूथ की देखेंगे ना, they have better themes, better subject matter. They can relate everything what they have faced. So we have to give space to our youth so that we can channelize them in a proper way. ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं. और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे लगती है एज अ राइटर, योर मीडिया, योर contemporary poets, critics, they don't promote you. मतलब if you ask any writer from Islamabad, he is unknown to the Srinagar people. Similarly with them, because we don't promote each other. We have that constraint that we should work on that. अभी आपने यंग राइटर्स की बात की. अभी अगर हम देखें कहीं कुछ ये जो कुछ अरसा रहा है, कुछ सालों से यंग ऑथर्स बहुत सामने आ रहे हैं, अपनी किताबें पब्लिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर. तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? दो चीज़ें हैं जी. एक ये है कि देयर शुड बी सम चेक. एक कंटेंट चेक होना चाहिए. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सेल्फ पब्लिकेशन, तो वो किस हद तक हम ऑथेंटिक लेते हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. बिकॉज 7th grade or 8th grade or 10th grade or 11th grade student, they are authors. And the question is, okay, not bad, but the question is, who has checked the content? What was the source of content? Right? If it goes like that, unchecked, I don't know, I think it leads us to something else. So do you think there's really a need to gatekeep? Exactly. Gatekeeping is a very essential component. My publisher, who publishes my books, they have the editorial board. They have denied so many books which were published by other publishing houses. So therefore, if we can make a check, we can create better content. So I believe every publisher should have that editorial board who can check, and there should be a gatekeeping. I like your word, gatekeeping is very important. Coming back to the young writers again, my question is, मतलब अगर कोई young author है, young writer है, budding writer है, aspiring writer है, आप, since you have a great experience in writing, what do you think a young author or a young writer should do? How do they start? Yeah, my teachers abroad, I have one faithful, very honest friend. He is a professor at JNU. He always says, before writing one line, you should read 100 lines. So reading is the backbone of writing. Unless you read, you cannot write. Even you can write, but that has no credibility. So better is to read, and read the contemporaries as well as the classics, as well as your histories, your literature, and your socio-political order wherein you. So you need to read a lot. If you read a lot, of course you will be a very effective writer. But if you start writing just for the sake of writing, after maybe a year or so, you won't be able to generate that much of literature, that much of content. So reading, I prefer reading. Reading is very important. It is bread and butter for the writer. इसके अलावा अगर पढ़ने के अलावा, रीडिंग के अलावा, अगर कोई एक नसीहत जो आप करना चाहिए यंग बडिंग ऑथर्स को, क्या होगी? Improve their writing skills. Okay. And skill is even you cannot actually certify someone that you have skilled now. It's a lifelong process, right? So nobody can actually give you the license, okay, now you are a writer, because when you talk of skills, is a continuous process. You can never say, that skill never stops, right? There's a skill within the skill. True. So it's a long journey. A good writer must have a good writing skills as well. He must know what and how to write. That's very important. So वो कैसे पता चलेगा कि किसी के पास गुड राइटिंग स्किल्स हैं या नहीं? बिकॉज आजकल जो हमारे यंग राइटर जो बच्चे लिखते हैं ना, इज आई हैव सीन
इट्स मोर AI कंटेंट उसमें आता है ज़्यादा, जो जिसकी वजह से मैं बहुत ये दुखी हूँ कि अगर कम ही लिखे, ओरिजिनल लिखे, that will make you, you can create a mark in the market. For example, I'll quote an example. If we talk of the poets who have actually given a lot of content, maybe in 60s or 50s, they might have never thought that there will be an internet available. Their content will be checked. Is it original, copied, borrowed, right? So there is a problem. Now we will land into the era wherein the original and that component and artificiality will be separated. At that time, it will be very difficult for you. You will be humiliated. So therefore, I keep things simple. Write less, but write original content. Keep the originality into consideration. Don't go with the flow, right? It is better to write a line rather than 10 lines that are copied. Okay. So coming back to your work, आपने 19 किताबें लिखी हैं. What else is in your kitty right now? I am writing right now a novel. That is a fantasy novel. There is one project. Second, I am translating Shamas Fakir Sahab. I think this is the project for 2 years. Okay. That is currently on my plate. So जब आप लिखते हैं, जब आप लिखने बैठते हैं, तो कैसे आप डिसाइड करते हैं, मतलब कोई टाइम टेबल होता है या आप कैसे डिसाइड करते हैं इतना वक्त मुझे लिखने को देना है, इतना वक्त मुझे फिर इसको प्रूफ रीड करना है, वो सब चीज़ें. राइटिंग इज अ प्रोसेस. You know, once you are in the writing, you become mechanical. You have a timetable. You finish up your daily chores. You come back and you have fixed 2-3 hours per day. So within those 2 hours you do it. And even Sundays, I told you, unless you sacrifice time, you can't do anything. So I sleep less. You write more. Yeah, of course. That is the secret. Okay. That is the secret. Since you have written so many books, how do you get आपको वो कंटेंट या कोई आइडिया जो होती है, आइडिया जनरेशन, वो कैसे होती है? I told you that the backbone of writer is reading. Okay. You have to read a lot. You have to read a lot. It's like you're an engineer and you start building up, creating architecture designs. Someday your tools are not sharp. Right? Right. You have to sharpen your tools. That's reading. Reading actually sharpens your tools so that you can use them in the best possible way. So I keep saying, you are a writer only if you have read others. Okay. And believe me, people right now in Kashmir, young youth I'm talking of, they have hardly any information about the writers who are around. They have not read them. This is something which is not encouraging. We have to read each other, we have to promote each other, and we have to project each other. True. So अगर हम बात करें, कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि रियल लाइफ इंसिडेंसेस से लोगों से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? I think जो मेरी नॉवल है Shades and Shadows, yeah, that is the Xerox copy of my childhood. That's, if I say is 90%, okay, it is fine. It's a 90% my childhood. How I actually what was the dream, what was my childhood, how we spent. And if I compare with today's childhood, is totally technical. We have lived much simpler and we were more close to nature, right? The youth right now, they are more alienated to nature. So of course a lifetime experience, they play a big role in your life as a writer. And I believe that writers must travel a lot. Traveling teaches you more than reading. So good writers have traveled a lot.
आपका बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने आज हमें वक्त दिया और बहुत इंसाइटफुल बातें की। आई एम श्योर जो लोग ये एपिसोड देखेंगे इंशाल्लाह उनके लिए अच्छा फ़ायदेमंद ही साबित होगा। इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड कीप दिस प्रोग्राम अलाइव, कॉल other people as well. इंशाल्लाह। So we have the galaxy of writers. So इंशाल्लाह देखेंगे हम भी आप। आज के शुमारे में इतना ही। आप देखते रहिए कश्मीर लाइफ।